Good morning, bachcho. Today we'll see some more provisions of TDS. First is payment from recognized provident fund to employees under Section 192A. Section 192A deals with TDS in respect of payment from recognized provident fund to employees. So let us see the provisions of this section. If the amount of recognized provident fund at the time of payment is liable to tax, the tax shall be deducted at source at the rate of 10%. तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से दी जाने वाली राशि यदि पेमेंट के समय टैक्सेबल है तो TDS 10% के रेट से होगा. If the employee fails to submit his permanent account number to the employer, the tax shall be deducted at the maximum marginal rate, that is 30%. यदि एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को अपना परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश नहीं करता है, सबमिट नहीं करता है, तो उस केस में मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया जाएगा और मैक्सिमम मार्जिनल रेट है 30%. एंड इफ सच एन अमाउंट इज लेस देन 50,000 रुपीज़, नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स. तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से दी जाने वाली राशि यदि 50,000 रुपये से कम है तो उस केस में कोई टैक्स एट सोर्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा. Then comes section 193 and this deals with TDS in respect of interest on securities. So the various provisions of section 193 are given below. Who is the payer? Payer of interest on securities. भुगतान करता कौन है? भुगतान करता है सिक्योरिटीज पर दिए जाने वाले ब्याज का. Second is who is the recipient? A resident person holding securities. प्राप्तकर्ता कौन है? ब्याज का प्राप्तकर्ता होगा सिक्योरिटी होल्डर. Payment which is covered under section 193 is interest on securities. प्रतिभूति पर मिलने वाला ब्याज इस सेक्शन में कवर किया जाता है. Next is at what time tax has to be deducted at source. Tax at source किस समय डिडक्ट किया जाएगा? Tax will be deducted at source at the time of payment or at the time of credit, whichever is earlier. ब्याज के भुगतान के समय और ब्याज को रेसिपिएंट अकाउंट में क्रेडिट करते समय, दोनों में से जो घटना पहले घटित होगी उस समय टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किया जाएगा. एंड रेट्स ऑफ TDS 10%. Rate of TDS is 10% and this rate is applicable from 1st April 2020 to 13th April 13th May 2020, and rate of TDS is 7.5%. And this is applicable from 14th May 2020 to 31st March 2021. Now tax shall not be deductible at source from any interest payable on. निम्नलिखित ब्याज के भुगतान के संबंध में कोई टैक्स एट सोर्स डिडक्ट नहीं किया जाएगा. तो इफ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, if interest is payable on national development bonds, if interest is payable on debentures issued by cooperative society or any other institution, authority, public sector company, and which are notified by the central government. Next, any security of the central or state government. सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की किसी भी सिक्योरिटी पर ब्याज में से कोई TDS नहीं होगा, बट देयर इज एन एक्सेप्शन. एक अपवाद है. हाउएवर द टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट ऑन 8% सेविंग बॉन्ड टैक्सेबल 2003 और 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018 if interest payable exceeds 10,000 rupees during the financial year. Next point is any interest payable
to a resident individual or a HUF on debentures issued by a widely held company। यदि widely held company के द्वारा issued debentures पर ब्याज का भुगतान resident individual और HUF को किया जा रहा है तो कोई TDS नहीं होगा if the interest is paid by the company by an account paid check and the amount of such interest paid during the financial year by the company to such individual or HUF does not exceed 5,000 rupees. Next is any interest payable to Life Insurance Corporation of India or to any of the four companies formed under General Insurance Business Nationalization Act 1972 or any other insurer, and tax will not be deducted at source in respect of an interest on listed डीमैट सिक्योरिटी। यदि सिक्योरिटी डीमैट फॉर्म में है और वो रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो उसके संबंध में जो ब्याज दिया जाएगा उस पर भी कोई टीडीएस नहीं होगा। नाउ लेट अस कम टू सेक्शन 194A and this is related to interest other than interest on securities। प्रतिभूतियों पर ब्याज के अलावा दूसरे ब्याज से संबंधित ये ब्याज है जिसके संबंध में हम TDS देख रहे हैं सेक्शन 194A में। सो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 194 आर नंबर 1 हु इज द पेयर एन इंडिविजुअल और HUF who is required to get his accounts audited under section 44AB during the financial year immediately preceding the financial year in which interest is paid। If the total sales or gross receipts of business exceed rupees 1 crore rupees and in case of profession gross receipts exceed 50 lakh rupees, the audit of accounts is compulsory for individuals and HUF। पेयर HUF और ऐसे इंडिविजुअल और HUF के अलावा एक कंपनी फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव बैंक लोकल अथॉरिटी AOP BOI और अन्य बैंक पोस्ट ऑफिस भी हो सकते हैं। हु इज द रेसिपिएंट एनी रेजिडेंट पर्सन। पेमेंट कवर्ड कौन सा पेमेंट यहाँ कवर किया जाएगा TDS के पर्पज़ के लिए। इंटरेस्ट एनी इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। एट व्हाट टाइम टैक्स इज टू बी deducted at source। This will be done at the time of payment or at the time of credit whichever is earlier, and rate of TDS is 10% applicable from 1st April 2020 to 13th May 2020 and 7.5% applicable from 14th May 2020 to 31st March 2021। इंटरेस्ट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन। इंटरेस्ट पर कोई TDS नहीं होगा इफ वेयर द इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस एंड द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट डज नॉट एक्सीड 40,000 रुपीज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो यदि ब्याज का भुगतान बैंक कोऑपरेटिव बैंक पोस्ट ऑफिस के द्वारा किया जा रहा है और एक फाइनेंशियल ईयर में दी जाने वाले ब्याज की राशि 40,000 रुपये से अधिक नहीं है तो कोई TDS नहीं होगा। एंड दिस लिमिट ऑफ 40,000 रुपीज हैज़ बीन रेज्ड टू 50,000 रुपीज इफ रेसिपिएंट ऑफ इंटरेस्ट इज ए सीनियर सिटीजन एंड वेयर इंटरेस्ट इज पेड बाय एनी अदर पर्सन। और यदि ब्याज का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है then the amount of interest does not exceed 5,000 rupees during the financial year। तो उस केस में ब्याज की राशि एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। Now we come to section 194B which is related to TDS from winnings from lottery, crossword puzzle, etc. So provisions of this section are who is the payer? Any person paying winnings from lottery, crossword puzzle, card games or other games। Who is the recipient? Any person। जीत की राशि प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
पेमेंट कवर्ड जो है दैट इज़ विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम्स और अदर गेम्स. एट what टाइम TDS इज टू मेड, यहाँ पर ध्यान रखना है TDS इज टू मेड ओनली एट द टाइम ऑफ पेमेंट. मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी पेड विदाउट TDS, अधिकतम राशि जो बिना टैक्स एट सोर्स डिडक्ट किए पे किया जा सकता है दैट इज 10,000 रुपीज़ and rate of TDS is 30%. Two important points related to TDS from lottery, crossword puzzle, etc. are where the prize is given partly in cash and partly in kind, the tax will be deductible from cash prize with reference to the aggregate amount of cash prize and the value of prize in kind. Where the winnings are wholly in kind or where they are partly in cash and partly in kind, but the part in cash is not sufficient to meet the liability for tax deduction in respect of the whole of the winnings, the person responsible for paying shall, before releasing the winnings, either in cash or in kind, ensure that tax has been paid in respect of the winnings. And second is where prize is given in installments, tax will be deducted only at the time of actual payment of each installment. इसको मैं आसान शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ. यदि प्राइज मनी पूरी तरह से कैश में दिया जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मान लीजिए प्राइज मनी 1,00,000 रुपये है, 30% के रेट से TDS होगा, 30,000 रुपये TDS होगा, 70,000 रुपये नेट दिया जाएगा. यदि प्राइज मनी पूरी तरह से वस्तु के रूप में, मान लीजिए 5,00,000 रुपये का प्राइज मनी वस्तु के रूप में है तो 30% इस पर TDS बनेगा 1,50,000 रुपये. लेकिन ये वस्तु में से डिडक्शन नहीं होगा. 1,50,000 रुपये पहले प्राइज विनर गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करेगा टैक्स के रूप में, उसके बाद ही उसे प्राइज जो है इन काइंड रिलीज़ किया जाएगा एजेंसी के द्वारा. यदि प्राइज मनी कैश और काइंड दोनों में है, मान लीजिए 5,00,000 रुपये का कुल मिलाकर प्राइज मनी है जिसमें 2,00,000 कैश है, 3,00,000 रुपये इन काइंड है, तो 5,00,000 पर 30% TDS होगा 1,50,000 रुपये. तो ये 1,50,000 रुपये 2,00,000 के कैश प्राइज में से माइनस किया जाएगा और 50 इस तरह से जो 3.5 लाख रुपए प्राइज विनर को मिलेंगे उसमें 50,000 रुपये कैश होगा, 3,00,000 रुपये इन काइंड होगा. और यदि प्राइज मनी 5,00,000 ही है लेकिन कैश पोर्शन 1,00,000 का है, इन काइंड 4,00,000 रुपये का है, TDS बनता है 1,50,000 रुपये, लेकिन चूँकि कैश पोर्शन 1,00,000 का ही है तो 1,00,000 माइनस हो जाएगा. 50,000 रुपये और प्राइज विनर टैक्स एट सोर्स टैक्स के रूप में जमा करेगा गवर्नमेंट ट्रेजरी में और उसका सबूत प्राइस पे करने वाले एजेंसी को देने के बाद ही जो एजेंसी है वो 4,00,000 रुपये का जो जो विनिंग्स अमाउंट है काइंड के रूप में वो प्राइज विनर को रिलीज़ करेगा. थैंक यू.